Hi, friends, and I hope your IELTS preparation, especially of speaking, is going pretty well as you are following my new videos related to the May to August 2022 session, along with the speaking booster, which is available at a massive discount. Only $199 is what you're paying till the 23rd of April. So if you haven't unlocked a copy for yourself, what you're waiting for? By the end of this video or in the description, you can get the purchase link of IELTS Speaking Booster. Today's video is another new cue card for May to August, and the examiners have already started to ask. मेरे साथ ये शेयर किया है a student from Ludhiana, and this new cue card being asked, and when you were listen to the cue card, आपके होश उड़ जाएंगे, और वो तो उड़ चुके हैं क्योंकि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया है कि क्यू कार्ड क्या है. And I believe that it is not going to be an easy thing to deal with on a given time for a student, but as you know, I always make the things easy for you, और ऐसे ही कुछ मैं करने जा रहा हूँ आज के क्यू कार्ड में. फटाफट से क्यू कार्ड और उसके क्यूज देखते हैं और फिर देखते हैं क्या इसका आइडिया रहेगा. एंड देन द सैम्पल आंसर. टॉक अबाउट अ पर्सन हु वर्क्स ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन. Cues can be who the person is, how you know about it, what exactly he does, and how do you feel about it. तो स्पेस के बारे में अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बताऊँगा. अगर नहीं भी पता है तो आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा. और ज़्यादातर मैं आपको कहता हूँ जो मर्जी बोल दो, आइल्स में काम चल जाता है. आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही फालतू की बातें हैं, लेकिन ये रियलिटी है वाकई. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेस रिसर्च. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेस ट्रैवल. जी हाँ, मैं बात करूंगा कि मेरा एक कज़न है जो अपनी पढ़ाई करने के बाद उसे मौका मिला नासा जैसी एजेंसी के साथ काम करने का. पंजाबी च भी नासा होंदियां ने, की होंदा है मतलब कमेंट सेक्शन च लिख सकते हो. बट NASA इज़ दी अमेरिकन स्पेस एजेंसी जिसके लिए उसको काम करने का मौका मिला. कुछ टाइम पहले वो इंडिया आया हुआ था. जिस टाइम मुझे वो मिला तो उसने मुझे अपने काम के बारे में काफ़ी कुछ बताया. उसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो नासा चला रहा है उसके बारे में बताया, और वो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है स्पेस ट्रैवल का एक जो मिशन जिसका नाम है हॉलीडेज ऑन मून. जी हाँ, इसके लिए उसकी कंपनी जो है नासा, उसने एलन मस्क के साथ काफ़ी बड़ी डील की है, $1 बिलियन की. एलन मस्क कौन है आपको पता है, इन पर भी मैंने क्यू कार्ड बनाया हुआ है. तो अभी ये कंपनी का काम है कि लोगों के लिए इस ड्रीम को ट्रू करना, रियलिटी में बना देना कि लोग हॉलीडेज़ के लिए अब स्पेस में जा पाएंगे. और इसके लिए मून पर एक काफ़ी बड़ा होटल बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग वहाँ पर अपनी हॉलीडेज़ इंजॉय कर पाएंगे. और लोग जाना क्यों चाहते हैं? ऑफ कोर्स दे वांट एडवेंचर, क्योंकि जो एंथुजियास्ट हैं वो इंडिया या इस प्लैनेट पे जो जो भी जगह हैं घूमने वाली वो घूम चुके हैं, और इनमें अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एडवेंचर के लिए वो स्पेस में जाना चाहते हैं. लेकिन इसके साथ थोड़ी दिक्कत भी है. पहले तो एक्सपेंसिव अफेयर है, $1 मिलियन कॉस्ट आएगा अगर आप घूमने जाएंगे. सो इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. एट द सेम टाइम हम बात कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, डेंजर इन्वॉल्व हैं, और यही सारी बातें हम करेंगे. लेकिन आपको उम्मीद है कि ये डेफिनेटली जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहेगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई भी स्पेस में ट्रैवल कर पाएगा. ये पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा. आइए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर कैसा है जो मैं आपके लिए रीड करने जा रहा हूँ इस स्पीकिंग बूस्टर से. ये मेरा हैंड रिटन बुक है जिसमें आपको इंट्रो, क्यू कार्ड्स अलॉन्ग विद द फॉलो अप्स मिलते हैं. एक बार परचेज करने पे अगले 6 महीने के अपडेट्स आपके पास फ्री आते रहते हैं. नहीं समझ आए कैसे बाय करना है तो फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे स्पीकिंग बूस्टर आप लिख सकते हैं. वेल, द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड शुड बी समथिंग लाइक दिस. Well, space has always been an area of interest for me, and I feel lucky I know one such person who works on space exploration. He's none other but my cousin Karan, who after completing his higher education had an opportunity to work with NASA, the leading space agency. Luckily, few months ago, he was visiting India, and during this time, I had an opportunity to meet him personally. During this time, he told me about the various projects NASA is working on, but the one that fascinated me the most was the holidays on moon. I showed my curiosity to know more about this project, and Karan gave me all the details. He said NASA had a $1 billion agreement with Elon Musk to make space travel a reality.
A massive hotel is under construction and soon it would be ready. Actually, there are many travel enthusiasts who are looking for adventure. They do not find anything interesting on this planet Earth anymore. For that reason, they want to travel into space and experience space condition along with low gravity, and their dream would come true very soon. However, space travel is not everyone's cup of tea because it costs millions. At the same time, there can be chances of mishaps which often create fear in the mind of holiday makers. To be honest, I have found this meeting to be extremely informative, as prior to it, I was totally or completely unaware about space travel. I wish this mission remains successful and in future it would become pocket friendly so that more and more people could avail the opportunity of traveling in space. And that's it. I hope कि आपको भी ये information काफ़ी नई नई लगी होगी और ये क्यू कार्ड आपके लिए भी काफ़ी informative है. Stay tuned to this channel to get the latest updates related to the IELTS exam. You watching YouTube channel Raman IELTS Coaching. Subscribe नहीं किया तो कर लीजिए, comment नहीं किया है तो कर दीजिए, like नहीं किया है तो कर दीजिए और एक share please कर दीजिएगा with your friends. Thanks for watching. Bye bye for now.